Well guys, so I just took a small break over here. I had some tea and snacks, and then we are moving forward towards Mirik, but we are not going to take the usual road through this way. What we are going to do is that we are going to take the road less taken. This is Manju Park and we are going to go this way now. तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपको आज के हमारे इस एपिसोड में। Oh my goodness. जहां आप देखेंगे चाय की खेती, उधर कंचनजंगा का पहाड़। एक बात, अंत तक देखते रहिए इसको, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज के आज मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। I'm not sure if everybody of you have come through this road and gone to Mirik, but even if you have not, then do not miss the opportunity this season. Okay? My goodness, the twists and turns on this road. Wow! Beautiful! Speak of it. And also, you said my Meteor 350 is only being able to do the climb in its second and first gear, and apart from that, like I said, each and every turn has these sand grains fallen. Okay, so you need to be very careful when you are riding on this road. अच्छा, You need to control your speed. ठीक है, Make sure that you are not using your brakes in the turns, ठीक है, but taking your vehicle very slow समझ गया, while you are doing, like, taking the bends. ठीक है, समझ गया। शाबाश बेटा। Wow. I don't know what this place is called, but I would have called it heaven. ये बड़ी अच्छी बात कही है। And like it said, the road to heaven is not very easy. So I have come through this way, and I am halted at this intersection. Okay, and I do not know which way to go, if I should take the left way or the right way. I don't know which is the right way actually, which is going towards Mirik. Like, give a direction. This way? Sure? जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। Okay, so we are going to take the right one towards Mirik. I can do a little bit of off-roading while on this road. এই রাস্তাটা যাচ্ছে? হ্যাঁ? Okay. Didn't take the risk. बस हवा निकल गई। This is quite an off-roading this way too. Okay, so I could have gone down that way too. Wouldn't have been very difficult for me, but that's alright. I prefer not to. अच्छा, Okay, so that was just a short detour through the main road towards Mirik, but it was quite good actually. Had quite a bit of off-roading, and I can now take it this way. So you know you have come close towards Mirik when you start seeing this sugar pine trees. This is the Tingling viewpoint from over here. Okay, I'll just hold the vehicle over here.
started with the sugar pine trees, and we have already entered the Mirik sugar pine forest. Okay, so this gets more beautiful as we move forward. So Mirik is towards this way, towards the right. Playground. The views can't get more beautiful. और दोनों तरफ आप लेक देख पाओगे यहाँ पे. सो इधर ही से शुरू हो जाता है मिरिक लेक बेसिकली. और थोड़ा ठंडा का मौसम में आएंगे तो व्यू और बढ़िया रहेगा. सब तो अभी अंदर में होगा, देख के पीछे चला गया है. चलो, so that's it for Mirik Lake, and now we are towards the Okati Tea Garden, and from there on this is our next halt at the Okati Tea Garden. and এইগুলোরকেই বলে হচ্ছে गोल पहाड़. मतलब इसका ये हिल टॉप्स जो है ना ऐसे बहुत ही सुंदर राउंड राउंड शेप में है, तो इसी को कहते हैं गोल पहाड़. Turn on my camera once more so that I can give my viewers a good view of Gol Pahar. So you can see why it is called Gol Pahar over here. इधर से तो आप जहाँ भी देखो व्यू ही मिलेगा आपको. ये रहा गोल पहाड़ का असली व्यू, और यहाँ से दिलाएंगे व्यू आप लोगों को, और साथ में फ्लावर्स भी. Do you think that we should go up a little bit more? বসো. এখান দিয়ে যাবে গোলপাহাড়? হ্যাঁ. এখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে আমরা এগোচ্ছি গোল পাহাড়ের আরও একটা ভালো দৃশ্য বা দর্শন পেতে. এই হচ্ছে সেই দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম পাইন গাছগুলো পাহাড়ের উপরে. এই হচ্ছে সেগুলো. এসে গেছি আমরা এখন গোল পাহাড়ের ওপরে. আর আশেপাশে কেন গোল পাহাড় করে, এদিকে আসো. দেখতে পাচ্ছ পাহাড়ের মাথাগুলো সবকটা গোল গোল মতো, ঠিক আছে. চা বাগানে মানে চা গাছ করেছে, এরকমভাবে শেপ হয়ে গেছে, দিয়ে গোল পাহাড় বলে এগুলোকে. নাইস.